हेलो गाइस, प्रदीप हियर। आज हम लोग सीखेंगे कि डेबिट और क्रेडिट का क्या क्या रूल्स होते हैं, कितने अप्रोचेस होते हैं और कौन सा अप्रोच ज़्यादा इजी होता है। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्लास, दैट इज बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। टॉपिक rules for debit and credit. Now, there are two approaches. First, traditional approach. Second, modern approach. Now, अभी ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता है, यहाँ पे वी हैव टू डिवाइडेड इनटू 3 अकाउंट्स। 3 अकाउंट्स हम लोगों को बनाना पड़ेगा। क्या क्या है वो अकाउंट्स? पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। एक्चुअली ट्रेडिशनल अप्रोच थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिकी है। क्यों ट्रिकी है? क्योंकि इसमें हम लोग को कौन सा पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, ये हम लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और ये हर एक अकाउंट के लिए सेपरेट रूल्स होते हैं। सो हम लोग ये अप्रोच नहीं करेंगे, हम लोग जाएंगे मॉडर्न अप्रोच की तरफ। ये ज़्यादा ईजियर होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है और ज़्यादा कन्फ्यूजन भी क्रिएट नहीं करता है। कैसे? सो मॉडर्न अप्रोच मीन्स यहाँ पे इन अकाउंटिंग देर आर सर्टेन थिंग्स, certain elements which are very important. First, assets. Second, liabilities. Third, income or gains. Fourth, losses or expenses. अभी लाइबिलिटी के साथ इक्विटी भी आता है। देयर इज अनदर एलिमेंट कॉल्ड इक्विटी। बस अगर ये सब चीजें इतना बेसिक्स है कि हर स्टूडेंट को पता ही होता है, एंड इट इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई कि कौन सा आइटम कौन सा हेड पे आता है। सो अगर हम लोग मॉडर्न अप्रोच पे जाएंगे, इट विल बी वेरी इजी, मोर इजियर देन ट्रेडिशनल अप्रोच। We CA student. I am a CA student. I am in CA aspirant. I am in CA intermediate. So we also follow this modern approach instead of traditional approach. It is more easier. So how to, like, what to do? How to identify? What are the rules for debit and credit? Simple rule. Just one. It will take maximum 5 minutes to understand. Okay, assets. Suppose if it is an asset. Now, what is an asset? Simple. Any economic resources which is held with the intention more than 12 months and it will generate future economic benefits. मतलब ऐसी कोई भी resources जो we acquire more than 12 months, at least उसका लाइफ स्पैन तो मोर देन 12 months होना चाहिए. So we will call that assets, and future economic gains भी inflows to the entity. वो future economic gains like in monetary terms or any other form, it should be
help us to get. So assets, this is called asset. Asset the rules is when asset increases we debit it. Simple. Asset decreases we credit it. Simple. Now assets, you can say it is good for business, whereas liabilities, it is a fully opposite of assets. You can say assets अच्छा है, जितना ज्यादा assets is good, जितना कम liability it's good, means inverse relation. So the debit credit rules also follow the inverse relation. What? When liabilities increases we credit it. Liabilities decreases we debit it. Simple. Yeah. Then income or gains. For income, any item which generates income or any income or gain, if the income is increases, then we credit it. Like income increases, credit. Income decreases, debit. Now loss or expense, same thing, inverse relation with income. Like losses increases, debit. Losses decreases, credit. So loss decrease means income. So the same relation will be loss. Income decreases means loss, debit. Income increases means loss decreases, credit. This is relation. Simple. Now the last item is equity. Equity means the shareholders fund. Equity includes shareholders fund, reserves and surplus, means the capital of the proprietor or owner of the business. It is the nature of this is same as liabilities, so that it comes under liability in the balance sheet. So the rules for it is same. Equity increases, credit. Equity decreases, debit. So it was the basic rules. It is very easy. So let's revise it. But assets increases, debit. Asset decreases, credit. Liabilities increases. It is liabilities it is inverse relation with assets. So assets increases, debit. Liability increases, credit. Assets decreases, credit. Liability increases, debit. Income and losses are with inverse relation. Income increases, credit. Losses increases, debit. Any income or gain should be credited, and any expenses or loss should be debited. Simple. Equities, it is same as liabilities. Hope it will help you. Thank you so much.